Hi guys, welcome back to the channel after the weekend. We'll be starting with benign neoplasm of bone. We have finished fibro-osseous lesion of the jaw and systemic diseases affecting bone. We'll be starting with benign neoplasm of bone. Okay, let's start. Benign neoplasm of bone. We'll starting with ossifying fibroma. Clinical presentation and pathogenesis. They are slow growing benign neoplasm and most commonly found in jaws. Ossifying fibromas are mainly found in jaws. They are also found in long bones, but they are mostly found in jaws. Early ossifying fibromas are small and may be radiolucent. As they enlarge and mature, they will become mixed radiolucent radiopaque and completely radioopaque. Okay, sorry. As they start growing, when they are in early stage, when they are small, they'll appear radiolucent on radiograph. As they enlarge and mature, तो mineralization start होगा, तो they will appear mixed, that is both radiolucent and radiopaque. And when they are completely matured, they will appear radioopaque. Now, expand slowly and asymptomatically. They are slow growing benign neoplasm and they are asymptomatic. Their expansion is symmetric form from the epicenter to the tumor margin. अंदर से बाहर की तरफ एक्सपेंशन होता है और सिमेट्रिक फॉर्म में होता है. ओके, सो गिविंग इट और क्रिएटिंग अ स्फेरिकल और एग शेप मास ऑन प्लेन रेडियोग्राफ्स एंड सीटी स्कैन. तो ये जो सिमेट्रिक एक्सपेंशन होता है, it will give it a spherical or egg shape mass on plain radiograph and CT scan. They are more common in women. Women are more commonly affected than male and mostly in their 20s and 30s. Now, in mandible, they are found in ramus or above the alveolar bone in maxilla. So, they are mostly found in tooth-bearing area. They are mostly found in tooth-bearing area, which is consistent with the higher rate of bone and cementum induction in these area. टूथ बेयरिंग एरिया में बोन और सीमेंटम दोनों का इंडक्शन होता है, तो दे आर मोस्टली फाउंड इन दीज एरिया जहाँ पे सीमेंटम और बोन, क्योंकि वी नो दैट दे आर ऑल मीसेनकाइमल ऑरिजिन और बोन और सीमेंटम को एज सच डिफ्रेंशिएट हम लोग नहीं कर पाते हैं. सो एंड दिस इज ऑल्सो द रीजन दे आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन जॉज. Okay, so they are most commonly found in tooth bearing areas. Okay, now they may produce obvious facial distortion and expansion because they are slow growing tumor. अगर early stage में समझ में आ जाता है ठीक है, वरना वो expand होते जाएंगे, asymptomatic होते हैं, पेन वगैरह तो कुछ होता नहीं है, तो पेशेंट के नेग्लिजेंस या जिसकी वजह से भी they'll keep on growing and they will form a distortion. Facial distortion. Many expand to the point of ulceration from occlusion by opposing teeth. बहुत सारे इतने ज़्यादा एक्सपैंड कर जाते हैं, इंट्राओरली बात हो रही है कि इतना एक्सपैंड कर जाते हैं ट्यूमर दिस नियोप्लाज्म दैट इट विल कॉज अल्सरेशन इन द म्यूकोसा फ्रॉम द occlusion from opposing teeth. Now, because the tumor initially expands in bone, it remains encapsulated. Okay, it is encapsulated tumor. However, when it reaches a certain size, 2 to 3 centimeter in diameter, it loses its encapsulation and infiltrates into the adjacent normal bone. और जब बहुत ज़्यादा एक्सपैंड इनिशियली तो इनकैप्सुलेटेड रहते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गए और एक सर्टेन साइज रीच कर गए तो दे लूजेज देयर इनकैप्सुलेशन एंड इनफिल्ट्रेट इनटू द एडजेसेंट नॉर्मल बोन के अंदर इनफिल्ट्रेट कर जाते हैं. इट विल ऑल्सो इंड्यूस अ रिएक्टिविटी विद द एडजेसेंट बोन मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द ट्यूमर एज. और जब हम देखना चाहेंगे रेडियोग्राफिकली तो हमको कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं दिखेगा बिकॉज इट विल इंड्यूस रिएक्टिविटी विद द एडजेसेंट बोन, तो ट्यूमर का एज नहीं समझता है. मोस्ट ऑफ दीज लार्ज मेच्योर एंड वेरी मिनरलाइज ossifying fibroma in the past have been termed a gigantiform cementomas. पहले इसको gigantiform cementomas भी बोलते थे. when it become more large
more mature and more mineralized. Okay, that's all for today. We'll continuing this in next class. Till then, like, share, subscribe and comment. Bye.